Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the second part of some basic concepts of chemistry, and in previous lecture we have completed our introductory part, importance of chemistry and nature of matter. And now we would start from this point. Solid on heating becomes liquid, and liquid on heating becomes gas, and gas on cooling becomes liquid, and liquid on cooling becomes solid, which can be depicted through this expression, which is clearly showing that solid on heating becomes liquid and liquid on cooling becomes solid, and liquid on heating becomes gas and gas on cooling becomes liquid. So moving on to our next topic, which is classification of matter. We all know that matter is anything which has some mass and occupies some space, which is called matter. Matter is further classified into two categories, which is mixtures and pure substances. Mixture is further classified into homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures, and pure substances further classified into elements and compounds. So many of the substances present around you are mixture. For example, sugar solution in water, air. Air is a mixture of various gases, tea, etc. All are mixtures. And a mixture contains two or more substances present in it in any ratio, which are called its component. And a mixture may be homogeneous or heterogeneous. In a homogeneous mixture, the components completely mix with each other and its composition is uniform throughout. Sugar solution in air are thus the examples of homogeneous mixtures. And in contrast to this, in heterogeneous mixture, the composition is not uniform throughout, and sometimes the different components can be observed. For example, the mixture of salt, sugar, grains and pulses, along with some dirt, often stone pieces, are heterogeneous mixtures. So, in our daily life, we could see various examples of heterogeneous mixtures and homogeneous mixtures. होमोजेनस मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ। होमोजेनस मिक्सचर्स को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को हम फिज़िकली सेपरेट कर सकते हैं बाय फिज़िकल मेथड सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन एक्सेट्रा. So now moving on to our next point, which is pure substances. Pure substances have different characteristics from mixtures. Pure substances जो है मिक्सचर से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके जो कंपोजिशन होता है, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं और उनका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल भी हो सकता है. लेकिन मिक्सचर्स में जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं उनका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है. लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है. फॉर एग्जांपल सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. Glucose contains carbon, hydrogen, oxygen in a fixed ratio, and thus, like all other pure substances, has a fixed composition. And also, the constituents of pure substances cannot be separated by simple physical methods. प्योर सब्सटेंसेस में सारे कंपोनेंट्स फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं और वो प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते. प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंसेस का फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है एलिमेंट्स और कंपाउंड में. एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल को कंटेन करते हैं, वेदर वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो. लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है कि बहुत 2-3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिल करके फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स. सो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स आर सच एज सोडियम, कॉपर. These contain single atoms. And some of the elements contain molecules. Molecules which are formed through the combination of two or more atoms. So elements are also of two types: the elements which only contains one atom, or the element which contains or made up of two atoms, which is called as molecules. और जब दो और more atoms
डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं, या दो और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, तो उससे फॉर्म होता है कंपाउंड, विच इज़ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स आर वाटर, एमोनिया एंड कार्बन. Such in compound also there is a fixed ratio, such as water molecule consists of two hydrogen molecule and one oxygen molecule. Carbon dioxide consists of one carbon molecule and two oxygen molecule. So two hydrogen atom and one oxygen atom forms water. Similarly, a molecule of carbon dioxide contains two oxygen atoms combined with one carbon atom. Thus, the atoms of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristic of a particular compound. हर एक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर रेशियो में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, जो कि उस कंपाउंड को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देते हैं. एंड जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन is a gas and oxygen is also a gas, but the combination of these two molecules together in a water forms a compound which is a liquid. Water is a liquid, so the compound is showing different property from its constituent. Then hydrogen gas burns with a pop sound. Oxygen is a supporter of combustion, but water is used as a fire extinguisher. So it is also an example of a where a compound is showing a different property from its constituent. Moreover, the constituent of a compound cannot be separated into simpler substances by physical method. They can be separated by chemical methods. So, moving on to our next topic, which is properties of matter and their measurements. Every substance has unique or characteristic properties, and these properties can be classified into two categories: physical properties and chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हम मेज़रमेंट और ऑब्जर्वेशन तभी कर पाते हैं जब हम उनमें कोई केमिकल चेंजेस करवाएं. तब हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के. ये इंक्लूड करते हैं जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ कम्स अंडर chemical properties. So many properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature, and any quantitative observation or measurement is represented by a number followed by unit in which it is measured. For example, length of a room can be measured as 6 meter, where 6 is the number and m denotes meter. The unit in which the length is measured is meter. अब डिफरेंट मेज़रमेंट के सिस्टम हैं. एक इंग्लिश सिस्टम है, एक मेट्रिक सिस्टम है ना. मेट्रिक सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में इन लेट 18th सेंचुरी, है ना, एंड वाज मोर कन्वीनियंट एज इट वाज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम. And the need of a common standard system was being felt by the scientific community, and such a system was established in 1960 and is discussed here. So after there was a two different system of measuring these entities. So scientific community made a proper system which is internationally acceptable to measure different physical quantities along with their standard units, and that international system of measuring is called the International System of Units, which we also known as SI unit.
and that SI unit can be depicted here. That unit of length, its SI unit is meter. Unit of mass, its SI unit is kilogram. Unit of time, its SI unit is second. Unit of electric current, its SI unit is ampere. Unit of thermodynamic temperature, its SI unit is Kelvin. Unit of amount of substance is, its SI unit is mole, and unit of luminous intensity is candela. So moving on to our next topic, which is mass and weight. Before that, I would show you the flow chart of classification of matter, which is also given in NCERT, but I would also share it to you. This is the flow chart which is clearly showing the classification of matter. Matter got classified into mixtures and pure substances, and mixture further got classified into homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures, and pure substances further classified into elements and compounds. And this is the representation of atoms and molecules. That some of the elements exist in a single atom form, such as hydrogen, oxygen, nitrogen, copper, sodium, and some of the elements also exist as the combination of two atoms or more, such as here it can be seen as two atoms of hydrogen forming H2, which is existing as a molecule of hydrogen, and two atoms of oxygen combining to form a molecule of oxygen. So this is a simple representation of atoms and molecules. And the compound, for an example of compounds are such as water and carbon dioxide, which consist two hydrogen atom and one oxygen atom are combined together to form a water molecule, and one carbon atom and two oxygen atom are combined together to form a carbon dioxide molecule. These molecules forms compounds, and these compounds could express a different property from its constituents. So the international system of units, I have shared it. So this is the chart of international system of SI units. We have discussed it. So moving on to our next topic, which is mass and weight. So mass and weight. What is mass? Mass of a substance is the amount of matter which is present in it, while weight is the force exerted by gravity on an object. And the mass of a substance is constant, whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity. So मास जो है अमाउंट ऑफ मैटर है जो कि प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड मास. एंड वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट. इसीलिए अर्थ से अगर हम दूसरे प्लैनेट में चले जाएं जिसकी कोई ग्रेविटेशनल वैल्यू डिफरेंट होगी तो वहाँ पे वेट चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस, but mass cannot be changed. Moving on to next. So mass and weight. The SI unit of mass is kilogram, and there is a simple relationship between kilogram and gram, which is 1 kg is equal to 1000 gram. We all know that. Moving on to our next topic, which is volume. Volume has the units of length cube. So in SI system, volume has units of meter cube, but again in a common unit, liter, which is not an SI unit,
is used for measurement of volume of liquids, and 1 liter is equal to 1000 ml, and 1000 centimeter cube is equal to 1 decimeter cube. We all know that. In the laboratory, volume of liquids or solution can be measured by graduated cylinder, burette, pipette, etc. And a volumetric flask is used to prepare a known volume of a solution. सो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब, लेकिन लिक्विड को जब मेजर करना होता है, लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर करना होता है, तो उसे हम लीटर के फॉर्म में मेजर करते हैं. देन कम्स टू डेंसिटी. Density is equal to mass by volume. So density of a substance is its amount of mass per unit volume. So ऐसा unit of density क्या होगी? ऐसा unit of density होगी. So ऐसा unit of density can be obtained as. So SI unit of density can be obtained as, we all know that density is equal to mass by volume. So SI unit of density is equal to SI unit of mass by SI unit of volume. और SI unit of mass क्या है? किलोग्राम. और SI unit of volume है मीटर क्यूब. So किलोग्राम by मीटर क्यूब. So किलोग्राम per meter cube is the SI unit of density, which could also be expressed as kilogram meter inverse cube. एंड डेंसिटी को हम ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब में भी एक्सप्रेस करते हैं काफ़ी केमिस्ट, बट ये ऐसा ही यूनिट नहीं है. लेकिन अगर हम किलो मास को अगर हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दें, और अगर लेंथ को या वॉल्यूम को अगर हम मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, तो उसे हम ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब में एक्सप्रेस कर सकते हैं डेंसिटी को. लेकिन डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, विच इज़ किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब. Now moving on to next, which is temperature. टेम्परेचर के लिए 3 डिफरेंट स्केल्स हैं. सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस, देन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. केल्विन जो है ऐसा यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. और ये जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो डिफरेंट स्केल्स पे भी बेस्ड होते हैं. अब सेल्सियस थर्मोमीटर होता है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है, और 0 डिग्री जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वहीं फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री से 212 डिग्री तक मेजर होता है, और 32 डिग्री इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. And the Fahrenheit and Celsius scale that can be related through a relationship, which is degree Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius plus 32, and the Kelvin scale is related to Celsius scale as follows: K is equal to C plus 273.15. And I would show you that chart. So this is the relation. SI unit of density is given here. These are the expression which you have to emphasize, or which you have to remember to solve your questions. And this is the relationship between Fahrenheit scale and Celsius scale. And this is the relationship between Kelvin scale and Celsius scale. So this is it for today's lecture. So like my video, share it to your friends, and subscribe to my channel. Thank you everyone.